सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, इनकी मंजिल तो हिमालय है, इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाना है. Over to Dr. Agarwal. A very good morning to all of you. Morning, sir. Morning, namaskar, sat shri akal, and salam. So, Minu, as I am instructed, I should communicate with you in Punjabi. So, I will try my best to communicate in that also. So, finally, so respected principal madam, faculty, students. So, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में यहाँ पे. So, before I begin formally, so I would like to thank first of all my director Dr. P.K. Satyavali, who gave me an opportunity to communicate with you and present the lab activities as well as the DRDO activities in front of you. So I am also thankful to you, the college administration, especially Madam Meenakshi, who coordinated so well the whole activity, and that's all. And the main thing which जो है जिस करके सारे इकट्ठे हुए यहाँ थे, that the connecting thing is that आज़ादी का अमृत महोत्सव. We should remember that जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर जो स्टार्ट किया सी, उसी दे उपलक्ष्य दे विच जो है लेक्चर सीरीज जो है DRDO ने जो है स्टार्ट की है, एंड आई एम आल्सो प्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट थिंग. जो इनिशिएटिव जो लिया सी देश के प्रधानमंत्री ने, दैट वाज मेनली टू सेलिब्रेट द 75 इयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड द यूनिक कल्चर जो साडे देश की कल्चर है उसको सेलिब्रेट किया जाए, एंड सो दैट फाइनली वी कैन द देश के नागरिक मोटिवेट किया जाए सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो है. That was the main motivation. So I would say a few words के like अपन सबनों पता है जो freedom है जो काफी struggle तो बाद हासिल हुई सी जो country नू, उसके विच सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और अपने लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और बहुत सारे जो अनगिनत देशभक्त उन्होंने स्ट्रगल तो बाद अपन जो आजादी मिली. वीडियो कैप्चर्ड इन दिस जम्मू कश्मीर एरिया एंड you just to give a glimpse of what actually the problem actually. So same snow which looks so funny and enjoyable and sometimes turns into this type of activity. So coming to avalanche control, what we are doing मतलब basically avalanche control वास्ते जो है, I think videos running is some issue is there. Okay. बाहर सर इससे PPT से बाहर ही आना पड़ेगा. Okay. The gloves studies, madam I'm asking on that thing, this on climate change, those things, because the last year this lake burst and avalanche activity had happened in the Uttarakhand area, that Rishi Ganga area. So after that a lot of things were happened in our laboratory also, and the committee visited and we have taken some additional work also related to that. And this is Dr. Satish Reddy, who is the head of DRDO right now, and he had also visited and monitored our lab activities. We have one VR lab, that is virtual reality lab at Chandigarh also. Here we basically generate the artificial conditions of the entire mountain area, and the aim is to basically train the untrained people
army mainly the focus, and even other people also who want to venture into the mountain areas. And we can just on sitting in this like room, basically we can give lot of information to them, so that when they actually go in the field, they feel comfortable about that area, and unnecessary they don't do any mistakes. Sometimes make the India totally report free. Thank you with these words. Questions है तो I will like to answer any queries in general, and otherwise I would have like to show some videos. One or two. Which time is there, madam? Time is there, 1 or 2 videos. Organized space research in India started in 1965 when Vikram Sarabhai, the father of the country's space program, formulated its main objective of self-reliance in space technology. Launch of Integrated Guided Missile Development Program in 1983 and Light Combat Aircraft Program in 1993 marked the start of aerospace research in defense. These have propelled the country into the league of top 10 achievers in aerospace technology in the world. Many individuals have contributed in great measure to this achievement. As Aero India 2019 commences its 12th edition, we take a look at women achievers in the field of aerospace. Sarvatra was the first Indian woman to fly an aircraft. Born in 1914, she earned an aviation pilot license at the age of 20. Woman to get commercial pilot license in 1947. In 1956, Durva Banerjee was inducted as the first woman pilot of Indian Airlines. The first woman Air Marshal of the Indian Air Force, Air Marshal Padmavati, was the first woman officer to come out of the Defence Service Staff College. Karnal-born Kalpana Chawla was the first woman of Indian origin to reach space. Sunita Williams of Indo-Slovenian descent holds the record for the most spacewalk time for a woman. Flying Officer Gunjan Saxena and Flight Lieutenant Srividya became the first women pilots to fly into a combat zone during the Kargil War. Avani Chaturvedi, Bhavna Kant and Mohana Singh have already scripted history by becoming the first ever women supersonic jet fighter pilots of the Indian Air Force. Indian women have also challenged the stereotype that aeroscience in India is a male preserve. Women scientists at DRDO, ISRO and CSIR have made the country proud in J. Manjula has the privilege of becoming the first woman Director General, Electronic System of DRDO. A noted expert in the country's electronic warfare program, she is currently spearheading a number of development activities in integrated EW systems for all platforms. We have a good number of women scientists, fortunately, in our cluster. These women scientists are working, are contributing a lot to, for example, in the case of LRDE, for Uttam radar for LCA Mark 1A. So there's a very good percentage of women scientists working for this. We have a SAR project, a synthetic aperture radar project, in which mainly the women scientists are contributing. And one satellite payload, that is Kautilya, wherein women scientists are working in developing advanced alien system for. Aao beta. I want to think through all I have done. Thank you. My school name is Sain Das A.S. Senior Secondary School. The title of my poem is Science. If it is green or wriggles, it is biology. If it string, it is chemistry. If it does not work, it is physics. If you see star, it is astronomy. If it has faults, it is geology.
If it is incomprehensible, it is mathematics. It now experimentation is next in line. You get results that are so fine. Analyzing data comes up next. Then graph your data to show it best. Being a scientist is like writing. In the science, I held up a prism. The sun made a rainbow on my book. Our teacher explained about bending lights. My friends all came to look. Science is like writing. A poem takes white lights in me and water using for utensils, clean, bathing, swimming, drinking, cooking. Hello. Water is boom. Water is life. टेक्नोलॉजी ओ टेक्नोलॉजी चलो सुनाते हैं टेक्नोलॉजी कहाँ तुम हमको ले पहुँची कल तक जो हमने सपने देखे वो आज हो गए अपने अब तो सपने देख के लगता है डर कहीं आसमान में हो ना अपना घर पहले हम पत्र लिखते थे वे महीने ट्राई कर लेते रस्ते थे क्या ज्ञान दिया हम घर बैठे दुनिया देख रहे ये सौभाग्य हमें विज्ञान दिया हम घर बैठे दुनिया देख रहे ये सौभाग्य हमें विज्ञान दिया हर पहलू जो अनजान था हम वहाँ तक जा पहुँचे हर पहलू जो अनजान था हम वहाँ तक जा पहुँचे किस्सों में जो चांद था हम वहाँ तक जा पहुँचे किस्सों में जो चांद था हम वहाँ तक जा पहुँचे धरती को भी नाप लिया है मंगल का रहस्य जाना धरती को भी नाप लिया है मंगल का रहस्य जाना अंधविश्वास का त्याग किया पर जो सच था उसको मानना अंधविश्वास का त्याग किया पर जो सच था उसको मानना एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कुछ भी स्वच्छ नहीं रहा अब रहा न जल पीने है वायु न जीने लायक भूमि भी हो गई है बंजर कैसा है ये मंजर कान फोड़ती आवाज़ों का फैला घातक शोर उर्वरकों की बीमारी का भूमि में है जोर पानी बिजली की बर्बादी नित्य बढ़ती ये आबादी कूड़ेदान बनी ये नदियाँ प्रदूषित हुई ये भूमियाँ लुप्त हो रहे वन जंगल लुप्त हो रहे प्राणी लुप्त हो रही हैं ये नदियाँ लुप्त हो Class 12 and today I am here to present my presentation What will life be like in India in 2050? Before we start, guys, let me ask you a simple question. How we have been able to interact with each other in our daily life? This is family around the world thanks to hologram technology. Coming next, we have transportation. We use various modes of transportations like buses, cars, etc. But we are talking about futures. So there will be technologies like Hyperloop. So basically Hyperloop is ultra high speed ground transportation system for passengers and cargo. There is a company named Virgin Hyperloop. Technological leader. In the world of tomorrow, robots and artificial intelligence will play an accelerating significant role. According to scientists and experts, we will be having inexhaustible power and various benefits if we carry on with the same. And even India wants the economic growth faster, so it needs to have more technological advancement than the capital investment. So let's have some Indian robots also to interact and face with the society. So it should be on practical basis, not some theoretical basis. If we are teaching students on theoretical basis, we are just testing their memories, not what they are truly learning. We know laws. We know how they are implemented in theory, but not how in practical ways. So we need a system based on practical teaching, not just theory or memory-based terms. Future educators will have to understand the fact that students will need to learn a flexible personalized format. For some this may mean having a more technological focused classroom. Students will want their learning experience to meet their interests, time constraints and academic needs. Artificial intelligence is the ability of a computer or a robot controlled by a computer to do the tasks. Next I am going to discuss the quantum computing and मदद से चलाएंगे और ये 3D holograms बन जाएंगे इनमें हम वीडियोस भी देख सकते हैं एनिमेशंस भी देख सकते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए सारे काम कर सकते हैं
उसके बाद कंप्यूटर्स तो आज भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, पर ये 2050 में हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। इनके जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप रन करते रहेंगे। उसके बाद इनमें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, जिससे हमारे 2050 के लिए इंडिया को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद ड्रोन इकोसिस्टम एक वो चीज़ है जिससे हम घर बैठे हुए भी बाहर के नज़ारे देख सकते हैं। ये हमारे मिलिट्री के लिए यूज हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए रशिया और यूक्रेन की भी लड़ाई चल रही है, वैसे हम अभी रशिया की तरफ हैं, हमें अभी यूक्रेन की स्ट्रेटजी देखनी है, हम अपने ड्रोन वहाँ पर भेजेंगे और उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज देख पाएंगे। उसके बाद जैसे अब हम 2050 में ऐसा करेंगे, जैसे अभी जेट फाइटर्स हैं, उनके अंदर वेपन्स होते हैं और वो will be to protect the biodiversity. We can make technologies like smart collars embedded with GPS, meters and sensors to keep a track of endangered species, and making conservation drones which will protect our flora and fauna from natural disasters like forest fires. In my vision of India 2050, India will be a country with high technologies, and to run them technologies we need energy. But in my opinion, we will stop using the non-renewable resources of energy, and we will use this solar energy, wind energy and hydro energies. Communication plays a vital role in human life. It has facilitates the exchange of information and knowledge, and it builds relationship with others. Social media is a common example of this communication technology. But this technology is causing harm to our private life, such as it leads to crimes like cyber crimes, cyber extortions and cyberbullying. But by the progress, this will become safer, and the cyber security will be improved in these apps to protect ourselves from this. The president of Russia, Vladimir Putin, gave a statement that the country who will emerge as an artificial intelligence industry king will emerge as a global leader. In my vision of India 2050, artificial intelligence will be seen everywhere in the world. Then, some of the artificial intelligence will be seen everywhere are like the smart cars, smart homes, smart assistants and drones. Technology is nothing without us, and it's on us how to use them appropriately. Now coming to the conclusion part of my topic, inventions change the way we live. With time, they inspire other inventions and improvements. Or it can be said that inventions, the change is only constant thing in nature, or we should move towards the progress. Now it's time for trivia part. Like in future, the time travel would be possible, but only towards the progress. The cars can swim under the water, and with improvements in AI technologies, we will be able to explore our universe and able to know more about the white holes, black holes and wormholes. And most of our population will be urban and cities will be less polluted. And this is all my vision about the India's 2050. Sunday, after the week-long science festival, स्कूल के बहुत छोटे-छोटे बच्चों को भी इच्छा जागी है कि वो भी साइंस में कुछ ना कुछ करें, तो वो अपने छोटे-छोटे मॉडल्स लेके आए हैं, अपने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं. They've come dressed up as Newton, and they have their own scientific dances and scientific गिद्दा. So वो अब एक छोटा बच्चों का सेशन हम शुरू करने लगे हैं रागिनी ऑडिटोरियम में. It will also help in artificial intelligence. Like 3D printers will be present in our homes, and resource-wise as well. And in transport, electric cars will become common by 2050, which will mean a 30% reduction of road carbon dioxide emission. With the wider spread of technology, the petroleum consumption will also be substantially reduced. Also in communication, by 2050, 8 million people, that is 97.5% of population, then will have access to the internet. With advancement of translation technologies, language barriers will diminish. By 2050, automatically simultaneous interpretation will become default all over the world. We will be able to speak a foreign language with the help of special glasses and a mobile application or other devices. These technologies are present already in test versions. By 2050, they will be perfected. So
In a nutshell, I want to say that technology doesn't solve everything. Although numerous positive developments can be expected, certain processes like global climate change present a worrying outlook. The consequences will aggravate by 2050, and it's a question
एक हफ्ते से साइंस का फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है और यूँ तो ये फेस्टिवल था हंसराज महिला महाविद्यालय के मेंटोर, गार्डियन, संरक्षक और पर्सनल लाइफ में अगर मैं अपने पर्सनल रिलेशंस की बात करूं तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़े गाइड सर आपका इस परिसर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर अग्रवाल मिले हुए तो शायद कुछ क्षण ही हुए हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व जिस ऊर्जा को मेरी तरफ भेज रहा है, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हंसराज महिला महाविद्यालय के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर बातचीत करने का निमंत्रण स्वीकार किया। Indeed, sir, we are filled with gratitude that on this day, that is Sunday, which is reserved for your family, you have come to us. You have made yourself available to our students, sir. I am filled with gratitude beyond words. मेरे अपने फैकल्टी मेंबर्स और दूसरे स्कूलों से आए हुए अध्यापकगण और बहुत ही प्यारे बच्चों, जैसा कि अंजना ने आपको ये बताया कि हमारे यहाँ पे ये साइंस का महा-उत्सव पिछले 22 तारीख से चल रहा है और कल इसका फिनाले है 28 तारीख को। आज का ये दिन जो सुंदर हमारे बीच फैंसी ड्रेस पहनकर आए हैं, तो फैंसी ड्रेस के स्टूडेंट्स को वन बाय वन बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले एक नन्हे मुन्ने एस्ट्रोनॉट को जो कि मंच Last night I saw a dream in which I am an astronaut. Now I am telling you about the solar system. So our first but not the planet is Sun. It is situated at the center of solar system. It is the only star that gives us heat and light. It is a star and head of solar system. Our first closest planet to Sun is Mercury. Mercury is known as the god of travel. It takes 88 days to revolve around the Sun. Our second closest planet to Sun is Venus. Venus is known as the hottest and deadly. कोरोना वायरस एक संक्रमित बीमारी है। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। इस वायरस को होने के बाद व्यक्ति को बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खारिश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। कोरोना से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना, हाथों को मार्टिन कूपर ने किया था। स्मार्टफोन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। स्मार्टफोन आज के युग में सभी के पास उपलब्ध होता है। स्मार्टफोन की सहायता से हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं और स्मार्टफोन की सहायता से हम घर बैठे ही पैसे का लेन देन भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन की इतनी जरूरत है कि कहना चाहता हूँ, मैं एक मिसाइल हूँ जो कि लंबी दूरी से हवा में 20 फुट कर सकती है। 13 जनवरी 1949 को हुआ था। वह भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट हैं। वह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष मिशन को पूरा कर वापस I produce light from electricity. I can be used to show an electronic device is on and to direct traffic. The first electric light bulb was created by Thomas Edison in 1879. The average lifetime. I am a small machine. I am a हंसराज महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल मैडम अजय श्री जी, अग्रवाल साहब जी,
फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने मुझे भावी वैज्ञानिकों से मिलाया और मैं आपके आगे इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मुझे कितनी प्रसन्नता हुई उनको देख के बाहर जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाए। वो बच्चे 4th और 5th के थे, छोटे छोटे थे, लेकिन ये चीज़ें मैंने अटल लैब में बड़ी क्लास के बच्चों को करते हुए देखा। इन बच्चों के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो इसके लिए ये क्रेडिट सारा टीचर्स को भी जाता है और मैं चाहूँगा टीचर्स और बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मैं साइंदा स्कूल और इसके ब्रांचेस के बारे में अच्छी तरह मुझे ज्ञान है, चाहे मैंने वहाँ विजिट नहीं किया, लेकिन मुझे पूरा पता है कि वहाँ पर किस फैमिली से, बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और उनको कितनी कमी महसूस होती है कि जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन आज ये देखकर मुझे लगा कि हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित है। जो 75वां साल हम मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, उसमें हमें भी डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साइंटिस्ट इतने बढ़िया तैयार हो रहे हैं जो आने वालों को भी, जो इस समय है उनको भी वो बीट करेंगे, ये गारंटी है। अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम लोग Pneumonia and like other respiratory infection. I am the Delta variant of COVID-19. I quickly and efficiently spread between people. The third strain of coronavirus, which is virus called Omicron, is said to be more dangerous than the Delta variant. I am Omicron variant of corona. It has also not in India.
have improved the Indian economy status and have created many new ways to the new generation to grow in technological advancement environment. There are many new scientific research and development have been possible